So shelf made is kind of a pun on the app that we're going to build. So in the next 3 days, we'll assume that you know nothing about software development and walk from a ground up approach to building your very first Flutter application, something that you can use on a daily basis. So the app that we are going to build is a book tracker. So basically, you'll be able to search books and add them to your own personal library, categorize them as read or reading or wish listed. You can add favorite books. You can add the images. So basically, an all-in-all application that you can use every day. So yeah. Okay. So as I said, no prior experience in Flutter or Dart is needed, and you can just relax, enjoy the workshop, and I promise you, by the end of 3 days, you will learn something new. And also, there's a competition after the workshop. So we'll give you guys a stage and you can modify the app as we built and submit your applications. And we'll have a judgment round, and there are a lot of exciting things waiting for you guys. Anyways, so why app development? I'll just touch on that first. I mean, most of us do web development, right? Everyone has, in some point of their life, done put about HTML, a little bit of CSS and JavaScript here and there. So why shift from web dev to app development? Well, primarily because app development gives you an end-to-end control of your product. You can see something that users will like and relate to being built right in front of you. And who are we kidding? Everyone has a smartphone, so apps are the most widely used means of software that we have right now. Now, touching on why Flutter. So, Flutter is fairly new with comparison to React or other cross platform frameworks or app development frameworks. So, why Flutter? So, the main reasons are that Flutter allows us to build applications for literally every OS there is: Android, iOS, web, even desktop platforms like Windows, macOS, and Linux. So, that's something really cool. And that's something a lot of people love about Flutter, that it gives you the ability to write code once and create your software or run your software everywhere. Next up is that Flutter has really cool out of the box UI. Now, what we mean by that is the components that Flutter designs or develops or allows us to use, they are very beautiful out of the box and they follow standards that Google has set. So it's a pretty high bar. And finally, we'd say that it is backed by Google. It's a Google technology, and it's also used by some of the largest apps that there are. For example, Alibaba and BMW. Even everyone has used Google Pay, right? So Google Pay was entirely built on Flutter. So that should be exciting enough for you guys to understand how big Flutter is. Now, moving on to what you learned. So in today's session, we would just start off with our app. We would build the basic components of the app, design the home screen, and maybe add some functionality to our apps. Without doing a lot of delay with the presentation, I would actually like everyone to start with the process of building the app. Now, for that, we are going to use Firebase Studio, which is an IDE out of the browser. So Google has created something amazing. It's a cloud-based development software called Firebase Studio. All of you guys can go on to Google and search Firebase Studio. I'll open up the first link. I'll just show it here itself. So just search of Firebase Studio on your browser.
and click on the first link where you'll be greeted with this particular page, the documentation page for Firebase Studio. And you can click try Firebase Studio now, and you will be introduced to this amazing technology, this amazing IDE. Now, just a little bit about Firebase Studio. So it's a cloud-based IDE that allows you to create projects on a host of different technologies. That might be Python or Flutter or even other technologies like Next.js and Node.js. So what we'll do is we'll first create our Flutter application. We'll just go down here and select Flutter, as you can see over here. We'll select Flutter. And on doing so, we'll be greeted with this particular form where we have to enter the name of our application. Let's just name it Book Tracker for now. You can choose to name it whatever you want. And as you can see, with this name, a unique ID is also generated so that Google can track your projects and you can have a unique identifier for them. So it takes about a minute or so, and the project will be ready. So I want everyone to actually do this, and do tell me if you are stuck anywhere, if you have any problem opening Firebase Studio. I'll paste the link in the chat. So if you just check out the chat, Google Meet chat, you'll see that I've pasted the link of Firebase Studio. After opening, it would be great if you can just give a reaction, a thumbs up, so that we get to know how many of you have actually done it or been able to do it. Okay, so we have one reaction till now. Can we get some more reaction? Then we will start off. Okay, cool. Cool, cool. So a lot of people have opened up Firebase Studio. Now, as you can see, the Flutter project is created. It takes about a minute to create. It takes a minute to create it. And you'll see that we have a device or an emulator on the right-hand panel. So it will take a few seconds to load, but it should be all good afterwards. Okay, awesome. So we have the emulator with us right now. Now, many of you might be thinking,
Oh my God, there are so many files and folders. So what are we supposed to do now? Just I'll give you a brief idea of what this folder structure is. Well, our main code for the app lives inside the lib folder, which is short for library. Now, Flutter uses a language called Dart, which again is developed by Google. It's a very robust language and it supports a lot of features that you will really like. For example, hot reload, which allows us to see UI changes on the fly without restarting our app. Next up, we have the Android folder, which is as you guessed for the Android files. Similarly, we have one for web, we have one for iOS, and we have one for Windows. Now, they aren't available over here because they aren't done by default, all of them, but we can go ahead with Android for now. So, can we get a thumbs up for people who have followed till now? If you have understood the basic structure of the app or the Flutter project. All right, awesome. So, you'll see that we are greeted with a fairly simple UI of a demo application from Flutter. Now, this is just a simple counter application that will increase the count by one when you press this plus icon, plus button. So it's a very simple app, but it provides us with a starting point to developing the app. Now, here, if you read the comments, which again are very descriptive over here, you'll see that we have this very cool feature of changing colors and seeing the UI in real time. As you saw, I changed it from purple to green, and within the blink of a second, the UI has changed to a different color. And our data is also preserved. So we have 3 in the counter, and 3 is still there. Cool. Now, just a little more details about the project itself or the Flutter itself. The entry point of an application in Flutter or in many of the programming languages is the main function. Now, this I am sure most of you are familiar with. Everyone has done C. So this is a main function, which is the starting point of our app. Inside which we have the option called Run App, and then we have our basic Flutter widgets. All right. If this much is clear, should we move forward? React, tap, like chat on the Google Meet and tell me, guys, if you're clear with this much, and we'll move forward. Only one man. Okay, two. So because of so few responses, I would assume that there's some misunderstanding with Flutter. So many of you might not have really understood what I've said till now. Is that the case? Okay, and since we have no responses, I'll move forward. So yeah, now coming to Flutter itself, there's this concept in Flutter called everything is a widget. Now, what we mean by that is every component of this screen, this app is is called a widget. So this particular text, it's a widget. This particular button, it's a widget. This particular heading or the app bar, as we call it in Flutter, it's a widget. And guys, would you be comfortable if I use Bengali or Hindi? Will that be more comfortable for you guys? Please show me a thumbs up if Bengali or Hindi is better.
Okay, so I think বেশিরভাগ জন বাংলা বা হিন্দিতে কমফোর্টেবল, तो बांग्लाते ही करी, अच्छा हिंदी, तो सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ना? तो दैट्स कूल है, हिंदी में करते हैं, इजीली रहेगा। तो फ्लटर का एक कॉन्सेप्ट है जो है कि एवरीथिंग इज अ विजेट, सब कुछ विजेट है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि वी हैव विजेट ओवर हियर। तो व्हाट इज अ विजेट? दैट्स not really like the widget that you create on your Android devices. It's not really like the search bar for Google that is already there in your device. What widget means is that it's a component in your application. It's something that is drawn onto the screen. So the entry of the application by default it's called a, a my app widget, which returns a material app. What is a material app? So technically, material is the UI style or UI design of Google. We सब लोग जानते होंगे कि गूगल का जो डिजाइन होता है उसको मटेरियल डिजाइन बोलते हैं, और एंड्रॉयड 14 15 में मटेरियल डिजाइन इज सुपर सुपर कूल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्लटर वही मटेरियल डिजाइन फॉलो करता है। इनसाइड मटेरियल ऐप हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि टाइटल, ऐप का टाइटल लिखना। फिर आता है हमारा थीम। तो ऐप का थीम कैसा होगा, कलर्स कैसे होंगे, टेक्स्ट कैसे होंगे, और कौन सा कंपोनेंट कैसा दिखेगा, वो सब कुछ हम थीम में डिफाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली वी हैव द होम ऑप्शन विच डिफाइंस कि कौन सा स्क्रीन पहले दिखेगा हमारे लिए। जैसे देख सकते हो सब लोग, माई होम पेज बोल के एक पेज ऑलरेडी फ्लटर ने डिजाइन करके दिया, जो है हमारा काउंटर। तो फॉर अभी से 10 15 मिनट्स तक हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग जानेंगे क्या होता है ये विजेट के अंदर, कैसे काम करता है विजेट। तो ये होम पेज वाला विजेट जो है, इसमें सिंपल कंपोनेंट्स है। एक ऐप बार है, एक टॉप हेडिंग है, एक टेक्स्ट है और एक बटन है, सिर्फ 3 कंपोनेंट्स। तो द स्टार्टिंग और द बेस कंपोनेंट जिसके ऊपर सारा डिफरेंट कंपोनेंट्स रहता है, लिव करता है, उसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड। तो हम कहते हैं स्कैफोल्ड, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो इस स्कैफोल्ड में हम लोग बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ऐप का ऐप बार कैसा होगा, ऐसे टॉप बार कैसा होगा, उसमें टेक्स्ट कैसा होगा, और या उसमें स्टाइलिंग कैसा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अगर टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ तो माई ऐप इट विल ऑटोमेटिकली कम अप ऑन द फ्लटर एम्यूलेटर यहाँ पे। नेक्स्ट अप वी हैव डिफरेंट टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, हम लोग लिख सकते हैं कि बटन पुश, एंड सेव करने के इंस्टेंट द टेक्स्ट चेंजेस ऑन द स्क्रीन। तो दिस फीचर ऑफ फ्लटर, इसको हॉट रीलोड कहते हैं, एंड ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बोल सकते हो फ्लटर का, इज हॉट रीलोड। इससे क्या होता है कि जो डेवलपर है या आप लोग जो डेवलप कर रहे हो आप, उसको हर वक्त आपको रीस्टार्ट मतलब शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जो चेंजेस है वो ऑन द फ्लाई दिख जाएगा आपको। तो ये था हॉट रीलोड वाला फीचर। तो हॉट रीलोड सबको समझ में आया आई गेस? थोड़ा थम्स अप वगैरह कुछ रिएक्शन रिएक्शन दे दो, समझ में आया नहीं आया। चलो ठीक है, तो मोस्टली सबको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, कूल, वेरी कूल। आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग अप, सब डिलीट करते हैं और शुरू से लिखते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पैकेज है, ये सारा जो कोड है फ्लटर का, वो हम लोग मटेरियल डॉट डाट बोल के एक फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। मटेरियल डॉट डाट यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लटर गूगल ने जो लिखा था वो सारा कोड यहाँ पे है, और इन सारे कोड को यूज करके हम ऐप बनाएंगे। सो मटेरियल डॉट डाट ये वाला पैकेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अप हमारा जो एंट्री पॉइंट है ऐप का, वो है मेन ऐप, मेन फंक्शन। एंड इसके अंदर हमें फ्लटर को बताना है या एंड्रॉयड को बताना है कि हमें ऐप को रन करना है, रन ऐप। यू सी कि रन ऐप एक फंक्शन है जो अगेन एक विजेट लेता है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि फ्लटर में सब कुछ विजेट होता है। तो करते हैं ऐप को डिफाइन विजेट के स्टाइल से। तो विजेट डिफाइन करने के लिए हमारे पास VS कोड या फायरबेस स्टूडियो जो जो आईडीईज है, वहाँ पे एक शॉर्टकट होता है, जस्ट राइटिंग STL, जिसका फुल फॉर्म है स्टेटलेस विजेट। वही समझेंगे हम लोग कि स्टेटलेस विजेट क्या होता है और कौन कौन से टाइप के विजेट हो सकते हैं। बट जस्ट लेट्स फिनिश ऑफ विद द ऐप फर्स्ट, डिफाइनिंग द ऐप। तो मैंने ऐप का नाम लिख दिया माई ऐप, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जब माई ऐप लिखता हूँ तो फंक्शन से एरर हट जाता है। इसका मतलब मैंने फ्लटर को बोल दिया कि मेरे को ये वाला विजेट स्टार्टिंग में चाहिए। ऑसम। तभी ये विजेट क्या करेगा, ऐप तो अभी बना नहीं, तो हमें चाहिए एक बेस, एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स ऐप बनाने के लिए। वो हमें मिल सकता है मटेरियल UI से, मटेरियल डिजाइन से। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे मटेरियल ऐप, जो कि अगेन एक विजेट है जिसका कोड फ्लटर टीम ने बहुत सारा कोड लिखा है इसके लिए, तो 1176 लाइन्स। तो इट्स अ बिग विजेट, और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऑप्शंस देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि टाइटल, जो हम लोग दे सकते हैं बुक ट्रैकर फॉर एग्जाम्पल। और नेक्स्ट है हमारा होम, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्ट शुरू में कौन सा विजेट दिखना चाहिए, कौन सा स्क्रीन दिखना चाहिए। तो लेट्स जस्ट राइट होम स्क्रीन। ना फिर से यहाँ पे एरर आ रहा है मेरे को कि होम स्क्रीन क्या है, अभी तक फ्लटर को पता नहीं होम स्क्रीन क्या है। तो उसके लिए भी हमें करना है विजेट को डिस्क्राइब। तो फिर से लिखते हैं STL, तो स्टेटलेस विजेट। As you can see, auto complete is there for everything in Flutter. सब कुछ ऑटो कंप्लीट में मिलता है आप लोगों को। होम स्क्रीन एंड एरर हट जाता है हमारे मटेरियल ऐप से। ऑसम। तो नाउ विद द होम स्क्रीन, हमारा जो एजेंडा है, जो मोटिव है कि होम स्क्रीन में कुछ डेटा दिखाना है, कुछ चीजें दिखाने हैं, कुछ कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें लगेगा कैफोल्ड नाम का एक विजेट और एक कंपोनेंट, जिसमें हम सारे डिटेल, सारे दूसरे विजेट्स को रखेंगे। तो स्कैफोल्ड में पहला ही जो हमें दिखता है वो है कि ऐप बार वाला प्रॉपर्टी। तो ऐप बार मतलब ऐप के जस्ट ऊपर साइड में जो हेडिंग आता है, जो हाईलाइटेड सेक्शन आता है, उसको हम कहते हैं ऐप बार। और ऐप बार में जनरली क्या होता है कि टाइटल लिखा हुआ होता है। डिफाइन हम लोग भी टाइटल लिखेंगे बुक लिस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो कि वी हैव एन एरर, वी हैव एन एरर, एंड द एरर इज the argument type string can't be assigned to the parameter widget. Now what is this, क्या है? तो अभी हमने बात किया था कि फ्लटर में सब कुछ विजेट है। तो टाइटल, टाइटल के अंदर हमें क्या दिखाना है, हमें टेक्स्ट दिखाना है। so that's why we need to add a text widget, a text widget. Now when I save this and I restart my application, when I restart my application from the scratch, एकदम शुरू से,
तो हमें एक नया स्क्रीन मिल जाएगा जिसका टाइटल होगा बुक लिस्ट। इतना तो क्लियर है सबको? सिर्फ एक, यार थम्स अप वम्स अप कुछ दो या थम्स डाउन भी दे दो, रिएक्शन करो यार। दिस इज वेरी डेड, एवरीवन इज वेरी डेड। कुछ रिएक्शन वगैरह दिखा। ओके, कूल। सो समझ में आ गया सब लोगों को? दिख भी रहा है बुक लिस्ट हमारा, यहाँ पे दिख गया। तो ये क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत कलर देते हैं इसको, ये फीका फीका लग रहा है। सो लेट्स डू अ बैकग्राउंड कलर, है ना? नाउ यू सी कि फ्लटर में जो प्रॉपर्टीज है, जो विजेट्स है, वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है कि एग्जैक्टली exactly जो काम करना है उसके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन तो है हमारे पास। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड का कलर देना है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। तो मे बी आई विल गिव कलर्स डॉट ब्लू। मुझे ब्लू कलर अच्छा लगता है, सो मैंने ब्लू दे दिया। एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई हमारा कलर आ गया ब्लू। और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्कैफोल्ड में वो आता है बॉडी। अभी बॉडी क्या है? बॉडी का मतलब ये व्हाइट पोर्शन जो है, ये है हमारा स्क्रीन का बॉडी या स्कैफोल्ड का बॉडी। नाउ वी कैन ऐड अ टेक्स्ट इन द बॉडी, सो लेट्स जस्ट ऐड टेक्स्ट एंड हेलो वर्ल्ड। तो मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया कुछ, एंड वी हैव द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। बट आई डोंट लाइक इट, मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, एकदम स्क्रीन के सेंटर में। So what I can do is I can press Control and full stop, which is the shortcut for autocomplete, and I can select wrap with center। तो मुझे सेंटर करना था, मैंने बोल दिया कि सेंटर कर दो, तो ऑटोमेटिकली हो गया सेंटर। तो फ्लटर इज दिस इजी फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। कुछ ना कुछ विजिट, कुछ ना कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी होंगे। और अगर नहीं पता कि कौन सा विजिट है या एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो we can head over to docs.flutter.dev, can give you the link on the chat। so if we head over to docs.flutter.dev, यहाँ पे हमें फ्लटर का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। एंड फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी ह्यूज एंड इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग वेरी क्लियरली। सब कुछ गूगल ने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है फ्लटर के लिए। कौन कौन से विजिट्स है, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ है इसमें। तो मूविंग फॉरवर्ड, ये था हमारा बॉडी। नाउ इन रियल लाइफ हम लोग कभी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे ऐप में, हमें डेटा भी डिस्प्ले करना है, हमें सिक्वेंशियली आइटम्स भी डिस्प्ले करना है। तो वो कैसे करें? उसके लिए फ्लटर हमें बहुत सिंपल सा दो विजेट देता है कॉल्ड रो एंड कॉलम। लेट्स स्टार्ट विथ कॉलम फर्स्ट। तो वंस यू प्रेस कॉलम, तो सी की कॉलम नाम का एक विजेट है जो हमारे बॉडी में आ गया। नाउ कॉलम का यूज क्या होता है इन रियल लाइफ ऑल्सो? कॉलम इज सपोज टू शो डेटा one by one in vertical layout, right? Data in vertical layout। तो सिमिलरली कॉलम विजेट का काम होता है और डिफरेंट विजेट्स को एक वर्टिकल लेआउट में दिखाना। तो उसके लिए हमारे पास है चिल्ड्रन नाम का एक प्रॉपर्टी, जो कि है बेसिक सा एक लिस्ट या एरे, जैसे हम लोग जानते हैं ऑलरेडी सी में।
तो इस एरे के अंदर और लिस्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट विजिट्स डिफाइन कर सकते हैं. तो मे बी अ टेक्स्ट विजिट कॉल्ड hi GDG on campus एंड हमारे पास टेक्स्ट आ गया. नेक्स्ट अब अगर मुझे कोई बटन चाहिए तो मैं कर सकता हूँ fill button and I can get a button. Alright, as you can see हमारे पास बटन भी आ गया. Yeah, cool. So just like this हम लोग डिफरेंट डिफरेंट विजिट्स को लेआउट्स में पुट करके लेआउट्स पे लगा के ऐप का पूरा यूआई बिल्ड कर सकते हैं. इतना तक सबको समझ में आ गया होगा. इट वाज वेरी सिंपल. ओके, ऑसम, ठीक है. Okay, so Shlok has asked what other kinds of widgets are available. Yeah, we'll get into that right now. So in Flutter, majorly हमारे पास दो टाइप्स के widget होते हैं. एक को हम कहते हैं stateless widgets और the second one is called stateful widgets. Now इसका मतलब क्या है? What is state? This is a new term, right? What is state? States of matter तो है नहीं. So what is state? So basically, if you notice that in every app that you use, some data is stored or some things are stored, some things change according to user interactions, right? So maybe when you press a button, something pops up, एक alert आ जाता है, for example. So things keep on changing in app according to your interactions. Widgets that can track those interactions and change are called stateful widgets, and widgets that can't track these and don't change are called stateless widgets. So Shlok, does that answer your query on the types of widgets there are? We'll definitely create a stateful widget right now to understand what the differences are. But till now, did you understand? Okay, awesome. So yeah, next up, we'll actually try what Shlok said. We'll create a stateful widget. We'll create a widget that can change. So an easy way to do this is just by writing STF, which is a short form of stateful, and naming the widget as you want. So I'll name it as my stateful widget. All right. Similarly, just like the stateless widget, यहाँ पे भी हमें scaffold की जरूरत पड़ेगी. We'll need a scaffold. And उसमें कुछ details लगेंगे, body parameter लगेगा. So let's put it as column now. And we'll create the same exact layout, in fact, in stateless and stateful. Just to show you the difference. Okay, so if I go on to main.dart and change home screen to my stateful widget, you'll see the widget has changed, but everything seems to be messed up. App bar nahi hai, the layout is not there, there's no color. So we'll fix that. We'll add an app bar and we'll give it a title. So stateful widget. I will see कि यहाँ पे भी हमें एरर आता है कि
argument type string can't be assigned to parameter widget. So इसका मतलब है कि Flutter को यहाँ पे widget चाहिए कोई. So the easiest widget is text, क्योंकि हमें ज्यादातर टाइम में टेक्स्ट डिस्प्ले करना होता है. So cool. And next what we'll do is, I don't really like कि UI या buttons इतने पास है border के या screen के like ends पे. So हम padding देंगे. We'll add some spacing. Again, simply just by clicking Control and full stop, ये वाला विंडो ओपन हो जाता है, ये वाला टूल बार टाइप ऑफ, और वहां पे we can select wrap with padding. Can you see? Once padding is added, we get a gap. यहाँ पे gap आ जाता है between border and actual. Now we can change that as we want. We can increase the border, the padding, or we can decrease it. For example, I have added 24 pixels now as the border or as a padding. It should reflect right now. So cool. Now coming to actually what states do. We'll try to implement this whenever a user presses this button. जब भी कोई यूजर प्रेस मी वाला बटन को क्लिक करेगा, तो अब हाई जीडीजी ऑन कैंपस के जगह में we'll display some other text. Okay, so let's start by defining a string called my text, and initialize it to high GDG on campus. Okay, simple variable declarations जैसे सी में करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे, एंड टेक्स्ट के अंदर we'll just replace with my text. So you see, nothing really changes because text हमारा same है. But once I want to change this text, so हमें कुछ interaction देखना पड़ेगा. We have to wait for the user to interact with the application. Now for a button, the only options for a button are to click it, right? You can click it once, you can click it twice, you can click it 5 times. That's the option. Not easy easy option for called on press. Now on press का मतलब, you have to guess it, whenever button is pressed, this particular action will be done. So this is a syntax for press. We have 2 brackets followed by a 2-second bracket. So simple function declaration kind of thing. Okay. So inside of that, we want to change the text, right? We need a function called state. Text will just set what is in the screen. That what now. Yeah. So we have the autocomplete over here also. The set state is a function like all other functions, and it exposes some very important things. So what I can do is I can set the value of my text as welcome to the Flutter Workshop. And when I do this, you see the app magically change the text. So I'll just rerun the app. Give me a second.
Okay, by the way, are you guys following till now? And are you doing this in your actual laptops? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो सीखने को कुछ मिलेगा नहीं, फाइनल आउटपुट जीरो ही रहेगा. So if you are doing it, just react with a confetti or and let us know. Awesome. So there seems to be some problem with. Yeah. Okay. Cool. So as you can see over here, UI हमारा बन गया, and we have the high GDG on campus text. Now I just press the button, and automatically the text changes to welcome to Flutter Workshop. Right? I'll try to reload and show it again. Look closely. Whenever I press the button, the text will change dynamically. Okay. So I press the button and the text changes. So this is what the state of a UI means. This is what making apps dynamic actually look like in the backend. So I hope you guys have understood the basic concept of widget and what is a state. If so, give me a thumbs up on the React file. क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट 2 दिन you will not be able to follow. Okay, so I'll assume that सबको समझ में आ गया. ओके. अच्छा, पहला बात है विनय, प्लीज मुझे सर मत बोलो, मैं शायद तुमसे छोटा होऊंगा, सो कॉल मी बाय माय नेम नाउ. ओके, सो यू आर काइंड ऑफ राइट. ये तो सिर्फ फ्रंट एंड हुआ, तो बैक एंड कैसे बना सकते हैं? सो जनरली व्हाट हैपेंस इज, जब एप्स आते हैं, we try to make the backend as a separate service, as a separate set of features that we can integrate into the app. तो हम लोग जब ऐप का फीचर्स ऐड करेंगे, जब हम लोग सर्चिंग या एडिंग बुक्स का फीचर लाएंगे ऐप में, देन यू विल बी एबल टू सी इन पर्सन लाइव की कैसे हम ऐप में डेटा या ऐप में बैकएंड जैसा बोल रहे हो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. ओके विनय. Cool then. So just before heading off, I would like to introduce another widget to you guys, which is called a container widget. Now, container is very similar to a div. सबने शायद div use किया होगा HTML में. It's a standard component. So container is kind of like a div, and it allows you to draw things inside a certain boundary. So it's like a box, and उसके अंदर you can place other widgets. Now you might ask कि why a container? So containers are the most versatile widgets. सबसे easy, सबसे changeable widgets होते हैं containers. And more complex widgets or more complex UIs generally use containers to define it rather than relying completely on Flutter. So I can just add a few properties inside container. So we have a width
and we have a height property. So let's give it at 160, and we have a color. So we have a color property, and let's keep it as red. Uh, colors dot red. Once I save this, you'll be able to see once app reloads that a box of 100 pixels by 60 pixels of red color has been added to the UI right over here. Similarly, with container, you can add a child property like this, hi container, and it will add the particular text inside the container. So it's as simple as that. And the next days, what we'll do is हम लोग ये कंटेनर को यूज करके हमारा पूरा यूआई को फिर से प्रॉपरली बनाएंगे. So in tomorrow's session, we'll create the entire home screen in one day itself. And in the process, हम लोग books adding का feature भी add करेंगे. Okay? So इतना तक I guess everyone is comfortable with and everyone has understood. Okay, Shlok had asked, can you explain scaffold once again? Okay, so Shlok, basically, let's take a simpler example. Um, on a desktop, on your computer, you have your desktop screen, which is the landing page जहाँ पे आता है computer खोल के, and on top of that you have your different applications, so shortcuts to different applications. Now scaffold, you can consider scaffold as the background of the desktop, जिसके ऊपर दूसरे सारे apps या दूसरे सारे UI elements आते हैं. So that's what a scaffold does. And along with that, it gives you certain components or certain layout out of the box. For example, adding the particular app bar. ये जो app bar हमने add किया, so this is one of the properties scaffold gives us. And there is another property, for example, a bottom navigation bar. So for adding navigation on the bottom. The scaffold exposes some really, really interesting and cool properties for designing your app. That's actually all about scaffold that you will ever need to know. So look, ठीक था, explanation समझ में आ गया. So I hope scaffold is clear. Okay. And yeah, no other language is required for backend. No. So generally, it depends on what kind of product that you're working on. If you're working on large scale industry products or large scale softwares, you will technically have backend written in some language like Node.js or Python. And then you will integrate them into your app using what we call APIs. But in case of simpler apps or apps that are primarily Flutter, like purota Flutter, in that cases, you don't really need another language. Dart is sufficient for everything. Okay. Anyone else? Or किसी का कुछ भी questions हो about Flutter, about anything that we have talked about, or even something out of the context about app development. So you can ask them. Okay, sure. So about APIs, now APIs is actually a completely different thing. So it takes a huge amount of time to explain. But basically what APIs do is APIs bring data from your database to your app and send data from your app to the database. Kind of like in a restaurant. In a restaurant, the kitchen is where the food is cooked, right? So that's your database. But you don't really eat in the kitchen. You will eat in the dining area. And वहां तक जो खाना लेके आएगा आपके लिए, that's a waiter. So APIs are just like waiters.
they will fetch and send food or data from your app and to your app. That's how APIs work. Cool. Yeah. So middleman. Awesome. Anyone else out of the 12 other people? If you have any questions, we are open to it because आज के लिए इतना ही रखेंगे with the session. तो सिर्फ basics introduction था Flutter का and कल we'll work on the actual UI. Okay, since we don't really have any more questions in the house, so let's conclude today's session. So I'll hand it over to Shoptur Shida. Hello everyone, and really thank you Subhanu for taking this session and for your time and guidance. So if anyone have any questions after this session, you can drop this in our community group. We will try to answer that. And yeah, thank you for today. We will see you all again at tomorrow 7:30 p.m. Yeah, thank you. You can leave the meet now.